अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ये दोनों हमें एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स दिए हुए। सो लेट कर लेते हैं एम बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन 20 रेशियो एम प्रोपोर्शन एम रेशियो 45। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, so we get m square m into n m square is equal to 20 into 45, which is equal to 900. Take by taking square root on both sides we get m is equal to 30. So part 2 is 20x cube y5 into 5x 7 and y. Again let m be the mean proportional, then 20x cube y5 ratio m proportion m ratio 5x 7 y. We know that product of means is equal to product of extremes. So we get m into m square is equal to 20x cube y5 into 5x 7 y. We get m is equal to 10xy y cube. Got it? Part 3 is 15 P4 QR cube 135 Q5 R7. Let m be the mean proportion. Then 15 P4 QR cube ratio m proportion m ratio 135 Q5 R7. We know that product of means is equal to product of extremes. M into m square is equal to 15 P4 QR cube into 135 Q5 R7. By multiplying 15 with 135 we get 2025 P4 Q6 R10, and we want value of m not m square, so we take square root on both sides. We get m is equal to 45 p square q cube r5. Part 4 is x square minus y square and x minus y over x plus y. Let m be the mean proportion, then x square minus y square ratio m proportion m ratio x minus y over x plus y. We know that product of means is equal to product of extremes, so m square is equal to x square minus y square into x minus y x plus y. And we know that x square minus y square is equal to x minus y into x plus y, x plus y, x plus y cut off. We are left with x minus y into x minus y, which is equal to x minus y whole square. We want only the value of m, so we take square root on both sides. We get m is equal to x minus y. So क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।